Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. Student, I will appreciate all of you that you have done your assignment paper very well. Good, keep it up and take full interest in your studies. प्यारे बच्चों, आपका असेसमेंट पेपर देखकर बहुत खुशी हुई कि आपने इसमें बड़ी दिलचस्पी ली और उसे अच्छी तरीके से सॉल्व किया. Student, as you all know that it is your first assignment of month of September, so that first you make title page of month of September, then make a title page of giving chapter number 2, page number 11 of your book. In this chapter, we learn about plant and its advantages for us. स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि सितंबर के महीने का असाइनमेंट है, इसलिए सबसे पहले आप मंथ ऑफ सितंबर का टाइटल पेज बनाएंगे. इसके बाद अपने सिलेबस में दिए गए चैप्टर नंबर 2 का टाइटल पेज बनाएंगे. आपका चैप्टर नंबर 2 है व्हाट्स प्लांट डू फॉर अस. प्लांट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं. स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं चैप्टर को रीड करना शुरू करूं, आप एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि कीप योर फिंगर ऑन सेम वर्ड विच आई रीड. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2, व्हाट्स प्लांट्स डू फॉर अस. First point of this chapter, plant gives us many things. A lot of foods that we eat comes from plants. Sometimes it is obvious that you are eating parts of a plant. For example, a lotus leaf or a fruit like tomato. Sometimes it is less obvious because the plant's product has been processed to look very different from the part of plant which it is made from. Wood for our pencil comes from plants. The paper we write on comes from plants. Second point of this chapter is plants make their own food. How green and beautiful this tree. This is full of green leaves. Why are leaves green? Why do most plant and tree have green leaves? The presence of substance called chlorophyll makes a leaf green. Only green leaves can make food for the plant since they contain chlorophyll. Green leaves need air, water and sunlight to prepare food. पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं. आप देखेंगे कि ये सवाल हमारे जहन में बार बार आता है कि पौधे हरे क्यों होते हैं. इनमें हरापन इसलिए होता है कि इन पौधों के अंदर एक मादा जो कि क्लोरोफिल कहलाता है, उसकी वजह से पौधों का कलर ग्रीन होता है. पौधों को अपना खाना खुद तैयार करने के लिए हवा, सूरज वगैरह की ज़रूरत होती है. Plants give us vegetable. We eat fresh and green vegetable. They are good for our health. Vegetables are eaten raw or cooked. We eat different parts of vegetable. हम हरी और ताज़ा सब्जियां खाते हैं. ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं. बाज़ सब्जियां हम पकाकर खाते हैं और बाज़ कच्ची खाना भी मुफीद होता है. हम प्लांट्स के पौधों के डिफरेंट प्लांट्स जो हैं, हिस्से जो हैं, पार्ट्स,
उनको हम सब्जी के तौर पर यूज़ करते हैं। Leaves. Some plants store food in their leaves. We eat leaves of many plants as vegetables. बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिनके पत्तों को हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनमें स्पिनच, पालक, लूटस, सलाद का पत्ता एंड कैबेज, बंद गोभी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीवी vegetables. Stem. We eat stem of many plants. Potato, sweet potato, sugarcane, onion and ginger are some examples of eatable stem that store food prepared by plants. हम बाज़ पौधों के तने भी अपनी ग़िज़ा में सब्ज़ी के तौर पर शामिल करते हैं, जिनमें शकरकंदी, आलू, गन्ना, प्याज वगैरह शामिल हैं। रूट्स यानी कि जड़ें। We cook and eat roots of many plants. Turnip, carrot and radish are some of the roots that we use as food because they store food prepared by plants. Roots यानी कि जड़ें। We cook and eat roots of many plants. Turnip, carrot and radish are some of the roots that we use as food because they store food prepared by plants. बाज़ पौधों की हम जड़ें भी खाते हैं। इनमें गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर वगैरह शामिल हैं। टोमेटो, pumpkin and capsicums are some examples of fruit that we eat and use as a vegetable. इनमें शिमला मिर्च, टमाटर, कद्दू ये सब सब्जियां शामिल। Seeds. We also eat the seeds of many plants as vegetable. Long beans and peas are the example of seeds that we use as vegetable. हम बहुत सी सब्जियों के बीज भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें मटर वगैरह शामिल हैं। Plants give us grains. Many plants produce seeds that are edible. These seeds are called grains. Rice, wheat, barley, and pulses are some examples of grains. The plants that produce grains are called cereal plants. Wheat is used for making chapatis, bread, and cakes. Rice is used for making dosa and also eaten in boiled form. Plants give us oil. We get oil from the seeds of some plants like groundnut, mustard, sunflower, and coconut. Oils used for cooking are called edible oils. हमें बहुत से पौधों से ऑयल यानी कि तेल भी हासिल होता है। इनमें मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट वगैरह का तेल शामिल। Plants give us oil. We get oil from the seeds of some plants like groundnut, mustard, sunflower, and coconut. Oils used for cooking are called edible oils. Plants give us spice. We get spice like chilies, black pepper, ginger, and turmeric. From plants we add spice to our food to make it tasty. हम पौधों से मसालेजात भी हासिल करते हैं जो कि हमारे खानों को ज़ायकेदार बनाता है। Plants give us fruits and nuts. Fruits and nuts keep us healthy.
Plants give us many delicious fruits. You know that fruits grow from the flowers of plants. हमें पौधों से मेवाजात भी हासिल होते हैं जो कि हमें तंदुरुस्त और तवाना रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और हमें बढ़ाने में मददगार होते हैं। Plants provide food for animals. Cow, goat, and rabbit are some examples of animals that eat green leaves and stems of plants. पौधे जानवरों के लिए भी ग़िज़ा फराहम करते हैं, यानी जिनमें गाय, बकरी, खरगोश वगैरह जैसे जानवर शामिल हैं जो कि पौधों की पत्तियों वगैरह को खाकर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा पूरा करते हैं। Plants give us fibers. Some plants give us fiber for making clothes, sack, rope, and mats. Cotton, linen, and jute are examples of fiber that we obtain from plants. पौधों से हम फाइबर भी हासिल करते हैं जिनसे हम कपड़ा बनाते हैं, थैले, रस्सी, चटाई, कालीन वगैरह बनाते हैं। Plants give us medicines. We get medicine from plants. Such plants are called medicinal plants. We use the dried roots of mulethi to cure our cough and cold. The leaf juice of tulsi to cure our cough and cold. Leaves and seed of datura to cure asthma and bronchitis. The leaves and seed oil of neem to cure fever. Turmeric powder for the treatment of wound and aspirin. पौधों से हम दवाएं भी हासिल करते हैं। मुलैठी का पौधा हमें खांसी और ठंड को रोकता है। इसके साथ ही तुलसी हमारी खांसी और ठंड को रोकने के लिए कारआमद होती है। धतूरा सांस की बीमारी में बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। नीम हमें बुखार से बचाता है और हल्दी पाउडर जो है वो ज़ख़म और सूजन में कारआमद होता है। Plants give us scents and dyes. Everyone likes the fragrance of the flowers like jasmine, rose, and saffron. We make scent and perfumes from the flowers of these plants. We also like these flowers because of their beauty and good smell. We also obtain dyes of different colors from different plants. पौधों से हम इत्रियात और रंग भी हासिल करते हैं। बहुत से फ्लावर जिनमें जास्मीन का पौधा, गुलाब का पौधा, ये सब हमारे इत्रियात बनाने में बहुत कारआमद होता है। बाज़ पौधों से हम कलर भी बनाते हैं और वो कपड़े रंगने वगैरह के काम आता है। Plants are used for decoration and protection. Some plants are used to decorate our homes. Artificial plants are used in our homes for decoration. Some thorny plants protect our garden from animals. Plants also make our surrounding cool and comfortable. पौधे हमारी ज़िंदगी में हमारे घरों को सजाने के काम आते हैं और Plants gave us wood to make furniture. Trees such as walnut, shisham, pine, and deodar give us temper wood to make furniture, chair, table, sofa set, doors, windows, etc. are mostly made of wood.
दरख्त हमारे फर्नीचर बनाने के काम आता है और खिड़की दरवाजे भी इसके बनाए जाते हैं। Plant give us manure. Dead and dried plants are part of plants are used as manure. Manure is added in the soil to increase the growth of plants. पौधे खुद अपनी खाद बनाने के भी काम आते हैं। जो पत्ते झड़कर जमीन पर गिर जाते हैं वो मिट्टी में शामिल होकर खाद का हिस्सा बन जाते हैं और प्लांट्स को पौधों को ग्रो होने में मददगार होते हैं। Plant gave us many other things. Some plant gave us paper, gum and rubber. Paper, gum and rubber are very important in our daily life. We use them to make various useful things. प्लांट्स हमें और बहुत सी चीज़ें मुहैया करता है, जैसे कि पौधों से हम दरख्त के तने से हम कागज़ हासिल करते हैं, रबर के पौधे से हम रबर हासिल करते हैं और इसी तरह पौधों से हम गोंद भी हासिल करते हैं। Student, I hope you understand this chapter. How can plants useful for us and what they do for us. आपको अच्छी तरह ये चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इसको मैंने थॉरली आपको बता दिया है, इसके मीनिंग्स वगैरह सब क्लियर कर दिए हैं कि पौधे हमारी ज़िंदगी में किस तरह काम करते हैं, वो हमारी तरह किस तरह यूज़फुल साबित होते हैं, उनसे हमें क्या क्या हासिल होता है और वो किस तरह हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। Now student, come to your first assignment of September. Now your question number 1 is tick true and false from book page 21. Question number 1. Plants prepare their food with the help of a green substance in the presence of sunlight, water and air. This sentence is correct, so you tick true. Number 2. We eat plants from their stored food. This sentence is also correct, so you write here true. Number 3. We get cotton fiber from animals to make clothes. This sentence is wrong, so you write here false. 4. Quinine and penicillin are obtained from plants. The sentence is true, so write here true. Number 5. Gum is made from the juice of sugarcane plant. The sentence is wrong, so write here false. Number 6. Tulsi plant is mainly used for its fragrance. The sentence is wrong, so write here false. Number 7. Lutein is an example of a leafy vegetable. The sentence is true, so write here true. Number 8. Shisham plant is used to make dye and scents. This sentence is wrong, so write here false. Number 9. Sweet potato is an example of edible stems. The sentence is true, so write here true. Number 10. Grains are obtained from cereal plants. The sentence is true, so write here true. Okay student, this is your first assignment. I hope you do it in a well manner. Okay, if you have any problem regarding to this assignment, you can ask me on your WhatsApp group. Okay, thank you.